Hello bachcho. So let's read the question first. If I is the moment of inertia of a solid body having alpha coefficient of linear expansion, then the change in I corresponding to a small change in temperature delta T is. So the key concept that we are going to use here for this question is, so actually we are going to use two key concepts. So first key concept is coefficient of linear expansion formula. That is, new radii for the body is given by r1 equals to r times of 1 plus alpha into delta t, where alpha is coefficient of linear expansion and delta t is the change in temperature, while r is the initial radius for that solid body. Now, second key concept that we are going to use for this question is moment of inertia for solid body, which is actually denoted by I, is proportional to the radii square. Now, let us start with the solution. तो सबसे पहले हमें बोला क्या जा रहा है कि यदि I ये moment of inertia हो for a solid body और अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ linear expansion है, सो हमें बताना है कि चेंज इन आई करस्पॉन्डिंग टू स्मॉल चेंज इन डेल्टा टी. सो इसके लिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंसेप्ट, जब डेल्टा टी ऑफ टेम्परेचर में चेंज होगा, सो ऑब्वियसली इन अकॉर्डिंग टू दैट जो रेडियस ऑफ सॉलिड बॉडी होगा वो भी क्या होगा, चेंज होगा. सो लेट्स से द न्यू रेडियस फॉर द सॉलिड बॉडी इज r1, which should be equals to r times of 1 plus alpha into delta t. And this is happened just because of the change in delta t. Now, if we do a squaring on both sides, so हमें क्या मिल जाएगा, r1 का square is equals to r of square 1 plus alpha times of delta t that whole square. अब इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं, सो मिल जाएगा r1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी इंटू अल्फा का स्क्वायर. ना यहाँ पर हम अल्फा स्क्वायर की जो टर्म है उसे निग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज इट इज सो स्मॉल. ठीक है, सो सिंपली r1 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, r स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी की. Right. Now, by using the second concept, what we know that the moment of inertia for the body is directly proportional to the radii square. Now, let's suppose the mass of that solid body is capital M. So, यहाँ से मुझे moment of inertia for the body वो किसके इक्वल मिल जाएगा, m into r स्क्वायर के इक्वल. अल्टीमेटली यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि जो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आफ्टर द चेंज इन टेम्परेचर एज डेल्टा टी वो कुछ I1 की इक्वल है, और ये I1 किसके इक्वल हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ r1 स्क्वायर के. बट ऑलरेडी हमने r1 स्क्वायर फाइंड आउट करके रखा है, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर यदि हम पुट अप कर दे, सो ये हो जाएगा m टाइम्स ऑफ r स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, और ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई है, I1 की. नाउ फॉर द I1 यदि मैं यहाँ से एम आर स्क्वायर देखूं, सो एम आर स्क्वायर क्या है, I है, दैट इज इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द बॉडी. सो ये हो जाएगा I टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी. अब यहाँ से मैं I को अंदर मल्टीप्लाई करते हुए I को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, सो मुझे क्या मिल जाएगा, I1 माइनस ऑफ I इज इक्वल्स टू 2 अल्फा टाइम्स ऑफ I इंटू डेल्टा टी. नाउ सी हियर, I1 ये फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी है आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, और I ये इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फॉर द बॉडी. So final minus initial moment of inertia will give me the change in moment of inertia, that is delta I. So it comes out to alpha I into delta t. And see, यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, to find out the change in I corresponds to small change in delta t.
सो ये किसके इक्वल निकल के आया है, 2 अल्फा आई डेल्टा टी के. And this is we have found by using the concept of coefficient of linear expansion formula and moment of inertia for the solid body. Now let us take the option. So option C will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope it is clear to you. Thank you.